Hello everyone, and we are inside Kairang floating market, a wholesale market in Kantha, spelled as Kantho but pronounced as Kantha. इस मार्केट में मेकोंग डेल्टा की सबसे बड़ी होलसेल फ्लोटिंग मार्केट्स में से एक। यहाँ पे लोग नदियों में रहते भी हैं। वो हैमक देखिए कितना शानदार, अगर आप देख सकें तो। एंड देन दिस इज अ टूरिस्ट ग्रुप रिटर्निंग। दिस मार्केट ओपन्स रादर अर्ली, बाय 3 इट्स ऑलरेडी ओपन एंड आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू। ये लोग लोकल फ्रूट सेलर कोई जो मार्केट से फ्रूट्स खरीद के लौट रहे हैं। ये टूरिस्ट बोट, नो टूरिस्ट क्या, हाँ नहीं, ये भी कुछ खरीद के ही लौट रहे हैं। ये एक और ज़्यादातर लोग अभी फ्रूट्स ही खरीद के लौट रहे हैं। ये क्या खरीद के लौट रहे हैं मुझे पता नहीं। बहुत दिलचस्प, ये टूरिस्ट हैं। दीज आर वन लाइक द टूरिस्ट वंस, वो बस लौट रहे हैं। अनदर बोट, सी द मार्केट बोट, they have bought huge quantities or they have sold. That's pineapples. Wow, what a scene, what a scene. और इसीलिए मैंने बताया था जो आपको, इस मार्केट का कारोबार 3-4 बजे रात से शुरू होता है और इस टाइम तक आते आते निपटने लगता है। This market starts functioning by 3 AM and this is the time by which it winds down, and most of the tour groups which come here, they take breakfast in their hotels at 6. हमें यहाँ पहुँचने में हम लोग we got in this boat at 5:20 and it's already 6:03, so we took more than 40 minutes to reach here. एंड दे टेक दियर ब्रेकफास्ट एट 6। फिर वो शुरू करते हैं। बड़े ग्रुप होते हैं तो दे ऑल्सो टेक टाइम। अब देखिए ये हमारे साथ पहुँचे हैं, खैर अच्छा है। These are the groups which have reached. Yes, and ये देखें आप, ये देखें ऊपर फ्रूट्स टंगे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा था। This is the symbol what they are selling. This is exactly the symbol what they are selling, barring when they are selling the fruit. So again fruit, जब अगला कुछ मिलेगा तो I will definitely show you. And those who are joining late, we are in Kairang floating market, one of the biggest markets and floating markets in all of Mekong Delta. Wow, such a something new. Those who are joining late, welcome back to Vietnam with Sam. We are in Kantho, spelled as Kantho. This one is selling onions. Wow. So you saw the last one was selling fruits, so they had hung up for fruit. This one is selling onions, so they have hung up onions. And this one has something very different here. They are selling, looks like some roots, no, not really beetroot, but something like that. So they have hung up that, and this is the symbol. What they are selling, they hang that up on the top of a bamboo pole, barring when they are selling their boat, in which case they hang up a huge palm leaf. My boatman, boatwoman,
see the presence of women here everywhere, everywhere. Civilizational claims are that one is selling watermelons, so watermelon is hanging on top. Now this is lovely. This is a selling boat. This is a selling boat. मतलब catering to a tourist. They are selling soda and things जिससे हम लोग पी सकें. ये भी यहाँ पे केवल टूरिस्ट के लिए नहीं, बाकी भी सबके लिए, मतलब जो दुकानदार हैं, जो सेलर्स हैं, उनके लिए भी. And a huge ship is coming. I don't know for doing what. That's our boat woman. That one is really huge. I'm really happy that we got to see this floating market doing business. Most of the tour group will start coming now and will get to see nothing. These, you can see most of them are on their way back kind of a position. They are selling so many things, so they have hung up so many things on top. Again, see, different things. So different things on the top. Again, as I said, notice the presence of the women here. हर जगह महिलाएं, हर जगह स्त्रियाँ. बेवजह नहीं कि ये जगह बहुत सुरक्षित है. So lovely out here. Another shop which is selling soda and things like that. Soda, Coke. That's a big tour group. She is selling dumplings. That beautiful. See, she is selling dumplings to the tourists. भाई साहब सिगरेट लिए हुए मस्ती में. साउथ ईस्ट एशिया इज आई थिंक द लास्ट bastion of smokers, the last place on the earth where they are still respected, and I think that's because of the sailing tradition. See, a boat woman with her child. These are the things which make me fall in love with Southeast Asia, all of it. खाली नाव ट्रॉल होती हुई, not that trawl which have made our country living hell. ये पूरा प्रॉपर घर गमले के साथ, वो बच्चा खेलता हुआ अपने घर में. ये आप देखें, ये इसी में रहते भी हैं, कपड़े सूखते हुए. अगर आप कभी कांथा आए तो ये फ्रूट्स खरीद के जाते हुए, उनकी खरीदारी आज की संपन्न हुई. अब ये कांथा में बेचेंगे या शायद कहीं और. दैट वाटरमेलन शॉप. और जैसा कि मैंने बताया था, सी दैट बैम्बू पोल ऑन विच वाटरमेलन इज हैंगिंग, वही संकेत होता है. इफ व्हाट दे आर हैंगिंग देयर, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट दे आर सेलिंग हियर. वही बेचते हैं. I have no clue why these small boats. Another tour group. What an experience, what an experience. I'm really happy I chose to come here. Really happy. And with this, I have given you a proper glimpse. And I will say bye-bye to you for now, so that I can also take some pictures. See you all soon again with another dispatch. Thanks for being in Vietnam with Sam. See you all again.